ओके तो आज हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं समीर गुप्ता. सो समीर, टेल मी जस्ट अबाउट कि हाउ यू फील टुडेज अबाउट वर्कशॉप, कि कैसा था नेचर फोटोग्राफी एक्सपीरियंस, क्या आपने सीखा आज? इट वॉज गुड एक्चुअली. मैं वेताल टेकरी में पहली बार आया, तो आई डेंट हैव एनी एक्सपेक्टेशंस एज सच अबाउट द प्लेस. आई रेड अबाउट इट. तो काफ़ी बर्ड्स की स्पीशीज़ हैं यहाँ पे, तो उस वजह से आई चूज दिस प्लेस. एंड ऑफ कोर्स आपके वर्कशॉप की वजह से मैं इंट्रोड्यूस हुआ इस प्लेस से. और एंड इट वाज रियली गुड एक्सपीरियंस एक्चुअली. The specifics I learned about were so how to spot patterns in the nature. Earlier I used to focus only on the birds and species of the birds and all, but ये एक नया knowledge था मेरे लिए. Framing, composition, and especially how to spot patterns in the nature. Small things. Yes. There's nothing big you need find to look something for. uniqueness in nature. Right. So that was the biggest learning for me today. And apart from introducing to the place, that's the biggest thing. Yeah, because and whenever we are coming to a new place, it's a kind of hesitation actually. Yes. थोड़ा सा hesitation होते हैं, and better कि ask your friends to give you company. Yeah. In a new place. Yeah. So उसमें क्या आपको benefit होगा? You will not feel bored. Absolutely. Even if that person not photographer, वो photographer नहीं भी है, at least he will give you company. Absolutely. वो बहुत बड़ा advantage रहता है. बिल्कुल. So when we are going to a new place, and actually वो bridge हो जाता है because you whenever you conduct a workshop, तो वो बहुत seamless हो जाता है उस place के साथ accustomed होना. yes. Otherwise अकेले आओगे तो you have to do a lot of R&D yourself. Yeah, at least हम जब कभी नई जगह पे जाते हैं and someone is there to guide us about that place, बहुत easy हो तो जाता है. next time when you are coming ना, so you will feel more familiar. Absolutely. It's not a new thing, Absolutely. new place for you. Because you hesitate, like you said, you hesitate going to a new place and right. Okay, yeah, thank you so much for joining. Thank you so much. Yeah.